हेलो दोस्तों, दिस इज सुभाष कुमार फ्रॉम 3S लाइफ सेफ एकेडमी। मैं आज फिर आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूं जो पोस्ट IG2 प्रैक्टिकल रिपोर्ट रिस्क असेसमेंट के ऊपर होगा। होपफुली हमारे जो पहले वाले जो वीडियोस हमने दो वीडियोस मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी मैं पब्लिश किया था, आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं कुछ और इसको और फाइन ट्यून करके इस वीडियो को और मैं पेश कर रहा हूँ ताकि जो है जो पहले वाली वीडियोस में थोड़ी साउंड की कुछ एरर आ गई थी, तो इस वीडियो के द्वारा आप इसमें करेक्टली आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू मैं देना चाहता हूं जो नेबोस IG2 जो रिस्क असेसमेंट प्रैक्टिकल रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। नेबोस IGC का जब कोर्स आप कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि IG2 के अंदर में टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कैटेगराइज किया है। कैटेगरी 1 एलिमेंट 5 विच इज अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, कैटेगरी 2 विच इज अ एलिमेंट 6 मस्कुलेटरल हेल्थ, कैटेगरी 3 एलिमेंट 7 chemical and biological agents, category 4 element 8 general workplace issues, category 5 element 9 work equipment, category 6 element 10 fire and category 7 element 11 electricity. This is the total contents and the syllabus of the IG2 and why it is called category। जब हम नेबोश की जब हम IG2 प्रैक्टिकल रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके अंदर ये सारे कैटेगरीज के अंदर से हमें वो हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो हमें कोशिश करना है कि सारे कैटेगरीज हम जरूर उसको कवर करें जब हम रिस्क असेसमेंट किसी फैक्ट्रीज में या किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको हम रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं तो इन सारे कैटेगरीज को हमें मस्ट बी कवर्ड। यहाँ पे एक गाइडलाइन मैं देना चाह रहा हूँ, इसको आप बहुत ही ध्यान से इसको समझिए। इसके ऊपर ही सारे क्रक्स हैं, इसी के ऊपर सारे रिस्क असेसमेंट बनेंगे। रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट दी जाएगी जो कोर्स प्रोवाइडर के थ्रू हर एक स्टूडेंट को दी जाती है। और इसके अंदर में जो रिस्क असेसमेंट की जो टोटल टेम्पलेट होती है, जो फॉर्मेट होती है, उस फॉर्मेट के अंदर में उसको 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हमने गाइडलाइंस फॉर मेकिंग अ रिस्क असेसमेंट। तो यहाँ पे गाइडलाइंस क्या दिया हुआ है, practical risk assessment divided in 4 parts as under. So what is the first part? Part 1 is the background of an organization where the risk assessment done, brief about the risk assessment. Second part, the part 2 risk assessment for minimum 10 hazard out of 7 categories। तो 7 categories जो elements हमने कवर किया, आपको जो पीछे हमने जो बताया था वीडियोस में, वो सारे कैटेगरीज है। उसके अंदर में हमें 10 डिफरेंट हजार्ड आइडेंटिफाई करना है जब हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। थर्ड पार्ट 3 इज प्रायोरिटाइज द 3 एक्शंस एंड जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शंस। जो हमने कंट्रोल मेजर्स बनाए हैं उस कंट्रोल मेजर्स को हमें उसके अंदर में जो टॉप 3 एक्शन विच इज द बर्निंग इशू, विच इज द टॉप इश्यूज रिलेटेड टू रेस्पेक्टिव हजार्ड, we have to list on the top 3 issues and we have to justify the reason of selection of that top 3 issues। and the part 4 which is a review, check and communicate। so इसके ऊपर ही सारी, this is the foundation, the 4 foundation of your making the risk assessment, practical risk assessment for NABOS IG2। तो हमने अभी तक जो नेबॉश का जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है नेबॉश IG2 प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट का, उसके गाइडलाइंस के अंदर में जो 4 अलग अलग भागों डिवाइड किया गया उसके बारे में हमने एक ब्रीफिंग की। अब जो हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट के ऊपर में हर भाग को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो स्क्रीन के सामने जो पेश कर रहा हूँ वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 इज बैकग्राउंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिस्क असेसमेंट डन, ब्रीफ अबाउट द रिस्क असेसमेंट। तो आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट के ऊपर में जो पहला जो पार्ट 1 में जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में एक ब्रीफ जानकारियां देना है, ताकि व्हाट इज द कंपनी नेम एंड व्हाट इज द कंपनी अबाउट, व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द बिजनेस डिटेल्स यू हैव टू कैप्चर इन दिस सेक्शंस एंड देन ब्रीफ अबाउट द पर्पस ऑफ डूइंग दिस रिस्क असेसमेंट। यहाँ पे एक चीज और मैं नोट करने वाली बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो नेबॉश की तरफ से ये क्लियरेंस दिया हुआ है कि ये जरूरी नहीं है जिस कंपनी में आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उस कंपनी का एक्चुअल नाम ही कैप्चर किया जाए। हो सकता है कि आप रिस्क असेसमेंट किया है आपने, लेकिन उसके जगह पे आप दूसरी कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं या कोई भी XYZ कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क असेसमेंट एक्चुअल एंड फैक्चुअल होना चाहिए। So friends, we have covered the part 1 as a background. Now we'll start with the part 2। so part 2 is what about, is about the risk assessment and we have to do minimum 10, we have to find out 10 hazards out of 7 categories। so all we know about the what is the 7 categories and the elements। okay, now we'll find
minimum here we should find about the 10 hazard as per the NABOSH terms and conditions. Okay, but here I'll tell you, lots many students they restrict to the 10 hazard only. But what I can suggest you, if you have a chance of finding out about 12 to 15 hazard, it could be good for you. It will be safer side where you can able to have, in case suppose one or two hazard get not been considered also, at least your number of hazard should not get reduced below 10. So what is a thumb rule you can apply? So we have a total number of 7 categories. So here at least if you find out 2 hazard in each category, that will cover about 14 hazard. That will be good enough for you. We are doing the risk assessment where we find one hazard that is due to dust of the high concentration, and this dust of the high concentration comes under the which category, which comes under the hazardous substance element 7. So similarly now we'll proceed further. Now again we are finding it the other hazard under the category of work equipment element 9. What is the hazard is falling vehicle and or components. So this is one another type of hazard we found. So we have covered the 2 hazard now. Now next it is we are going to find third hazard. Now you can see the under the category of electricity we are finding the hazard related to the portable electrical equipments and IT related equipments. Okay, so we have covered the third hazard now. So we have covered 3 hazard as of now. Now we'll see the fourth hazard, where the fourth hazard coming up now. Now see the fourth hazard is coming as use of motor oil and fuel, which is coming under the category of hazardous substance. So now we have seen the fourth hazard. Now also we'll go for the fifth hazard. Now we have found the fifth hazard as a moving vehicle from parking base to workshop areas. So going for the sixth hazard now. Yes, we found the sixth hazard from the category of noise, which comes under the element 6 due to the excessive noise from the workshops activities. We will now find the seventh hazard. Now we found the seventh hazard now, which is due to the slippage of oil and motor fuel. So this comes under the slips and trips under the elements of 8. So this is the seventh hazard we have found. We'll go for the 8 now. So what is the 8th hazard we are finding it now? We got the 8th hazard working in the around inspection pit. That comes under the category of working at height under the element of 8. Now we'll look for the 9th hazard. What is coming up now? Yeah, we got the 9th hazard as a working on the top commercial vehicles. That comes under the categories and the element of 8 as a working at height. We are doing very good. Now we'll find out the 10th hazard. So what is the 10th hazard we are finding it now? Yeah, we got the 10th hazard as inhaling paints mist containing isocyanides, which comes under the hazardous substance element 7. So we have covered the minimum 10th hazard now, but now we have to find out another 3-4 hazards so that we'll have the safer side to making the total risk assessment. So what is the next hazard we are finding it now? Yeah, we got the hazard from the vibrations as a sanding and grinding activities. So this comes under the categories 5th as under the vibrations. So we got the 11th hazard now. We'll look some more hazard. Is there any possibility of getting some more hazard? Yes, we got the hazard as a 12th hazard working on air conditioning systems. This comes under the categories of health and welfare environment under the element of 8. We'll see a little more possibility of finding any other hazard. Yes, we got the hazard under the fire, and as a hazard is a welding work, hot work, smoking, iron, and faulty electrical equipments and other flammable substance, which comes under the category of fire as the element 10. So very good going. Let's see another 1 or 2 hazard could be found or not. Yes, we got the hazard under the load handling, which comes under the category of element 6 as a hazard as a lifting and transferring of materials around the workplace. So we got this is the 14th hazard. So now we'll see the part 3. So what is the part 3 about? We have to prioritize the 3 action and the justification for the selection of the top 3 actions, okay, under the respective hazards. Okay, so what we found under this 14 hazard, there's the top 3 burning issues with the organization. We found purchase a mobile bridge to allow the mechanics to be able to safely access both the sites. The second action required to be captured as an enclosed area to be set up by sanding and grinding operation, including that will include a suitable local exhaust ventilation systems. Third action to be done as a purchase of
and on-tool dust extraction system. So this is the top 3 actions we have prioritized now, and we have justified this. What is the reason we have selected this top 3 reasons? So now this is the final one as a part 4, to review, check and communicate. So what we have to do after completion everything, now we have to review the report, what we have done it, we have to check, and we have to communicate. Limitize your words within the given size of the words. Okay, so this is the 4th part we have covered now successfully. Now we have to submit the report to the NABOSH learning partner, and through the NABOSH learning partner will upload to the NABOSH portal. It will go for the review and the marking to the NABOSH. So now we have completed the report, and finally we are going to submit to the NABOSH learning partner. Okay, now here after 45, 50 days, 60 days, your result is going to be published on the NABOSH to the learning partner. Okay, or it will go to your email also. There could be a chance the learner could be passed, and there could be a chance the learner may not be passing, and they'll be called as a referred. So in what condition the learner will be called as a pass means, when you get the feedback report, there will be 18 criteria under all those four part. So all the criteria of each and every 18 criteria must be met. If any of the criteria has not been met, then the student will be called as a referred. So thank you very much. Thanks a lot for watching our videos on NABOSH IG2 practical risk assessment. I'm sure that this video is going to be very useful for each and every professional who are pursuing the NABOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety, NABOSH IGC with the new syllabus. Thank you very much once again. If you like this video, kindly subscribe, like and share.